आज हम डिजिस्किल के प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे, जिसकी ड्यू डेट है 3 सितंबर 2023। तो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू हैव क्लाइंट रिटेंशन यू शुड मैनेज योर एनर्जी, फोकस एंड इनकम रिस्पेक्ट टूवर्ड क्लाइंट ऑनलाइन स्टेटस स्किल्स। तो ये है जी सेकंड वाला, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स क्लाइंट। सेव एंड नेक्स्ट। व्हाट इज मोर बेनिफिशियल इन फ्रीलांसिंग? वर्किंग विद न्यू क्लाइंट एवरी टाइम, वर्किंग विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट, वर्किंग ऑन फिक्स प्राइस जॉब, वर्किंग ऑन हाउरली जॉब। तो ये वर्किंग ऑन हाउरली जॉब के बेनिफिशियल है। See next. What helped in identifying the exact requirement of a project? What helped in identifying the exact requirement of a project? Proposal type, billing system, project brief, project price. The requirement of a project brief, billing system, project price, प्रोजेक्ट टाइप, प्रोजेक्ट ब्रीफ। तो ये थर्ड वाला प्रोजेक्ट ब्रीफ है। सेव नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। अपसेलिंग में भी ए सिल्वर बुलेट इन फ्रीलांसिंग टू ग्रोथ to main features you need to have for upselling or effective business communication and dash. Upselling silver bullet in quality, equality, technique. Quality. Save and next move. What is meant by upselling? Encourage client to buy an additional service. This first one is the correct answer. Question number 6 है जी, why is casualty and reason important for client? To get extra work, to get good feedback, to show you to get referred, extra work, to get good feedback, to get good feedback. सेकेंड वाला इसका ठीक जवाब है जी। सेव एंड नेक्स्ट। वन ऑफ द पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ रनिंग एन अपवर्क एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर अदर एजेंसी मेंबर, too much pressure and workload, inability to take leave from work, too many skills are required. One of the possible disadvantages of running an upwork agency is responsibility and burden for the agency member. First one, save next. What should a freelancer use to stay updated with his freelance profile activities? Mobile application of the freelance marketplace, SMS service, direct notification from the desktop application, custom built mobile application for the project. What should a freelancer use to stay updated with his freelance profile activity?
Mobile application of the freelance marketplace. First one, next, save next. Question number 9 is the analyze the client before bidding on his project on Upwork. You should check this detail, including this project, a job, posted, hiring date, paid, hourly rate, and dash. Race, authenticity, पता नहीं क्या लफ्ज़ है, region, labels, or free feedback given by other sellers. Region, base, and authenticity, region, labels, feedback given by ये फीडबैक जो उसको और लोगों ने दिया उससे हमें अंदाजा हो सकता है. Last one is the freelancer of Upwork may also join the share their concern on a platform to find appropriate solution is called Upwork Room, Upwork Forum, Upwork Community, Upwork Support. इसमें आएगा Upwork Community. देखते हैं कि हमारे कितने आंसर सही हैं. सेव एंड मूव, क्लोज. तो ये देखें 8 हमारे आउट ऑफ 10, तो इट्स गुड. तो आपने एक दो चीज़ें और देख लेनी, एक दो और एक्सरसाइज क्विज किसी और चैनल से देख के, तो फिर आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.